Hi friends, meeting again today for 12th last problem of derivatives. At last सब टाइप खत्म हो गए. Derivatives लेंथी है, क्या करना है? We have to take all types. Okay? तो हर एक टाइप का एक एक प्रॉब्लम मैंने लिया है. अभी लास्ट टाइप क्या है देखते. We'll finish this in 10-15 minutes. Okay? So let us have a look. Friends, look over here. Exercise 1.4 question 4. Now this is not the last exercise. इसके बाद में जो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स है वो हमने लिए हैं. ये एक्सरसाइज अलग टाइप का इसलिए मैं लास्ट ले रहा हूं. डिफरेंशिएट tan इनवर्स x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड विथ रिस्पेक्ट टू सेक इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1. ये क्या चीज आ गई अभी? डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू x अभी तक करते आए हैं. डिफरेंशिएट y विथ रिस्पेक्ट टू थीटा अभी करते आए हैं. लेकिन व्हाट इज दिस? डिफरेंशिएट tan इनवर्स वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू सेक इनवर्स अदर फंक्शन. डिफरेंशिएट tan इनवर्स विथ सेक इनवर्स क्या है? डोंट वरी, विल सी द मीनिंग. सिंपल है, पैरामेट्रिक इक्वेशंस ही यूज करनी है. सो व्हाट डज द स्माइली से? की स्टेप्स. कॉल द फर्स्ट फंक्शन एज u. tan इनवर्स पहले फंक्शन को u बोलो. सेकेंड फंक्शन एज v. सेक इनवर्स फंक्शन को v बोलो. फाइंड du by dx and dv by dx. सेपरेट दिस डिफरेंशिएट, ये सेपरेट डिफरेंशिएट करना है, ये सेपरेट डिफरेंशिएट करना है. फाइंड du by dx, dv by dx and finally find du by dv. That is our answer. Now why to find du by dv? That we'll see when we start the problem actually. Now look over here. देखो, u is equal to tan इनवर्स ये दिया है x अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड. v is equal to sec इनवर्स 1 अपॉन 2 एक्स स्क्वायर्ड माइनस 1. दिस इज गिवन. हमको डिफरेंशिएट करना है u विथ रिस्पेक्ट टू v. डिफरेंशिएट u विथ रिस्पेक्ट टू v means differentiate first function with respect to second. That's all. Okay, so we have to differentiate tan inverse with respect to sec inverse means what? Differentiate u with respect to v. That's all. Finished. ज़्यादा सोचो मत. So differentiate u with respect to v means what? Find du by dv finally. Du by dv आ गया means you have differentiated the first function with respect to the second function. That's all friends. Okay. जिनको लिखना है लिख लो प्रॉब्लम. जस्ट राइट डाउन. एब्जॉर्ब किया सबने? ओके. सो डिफरेंशिएट वन फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू अदर मींस फाइंड du by dv. दैट विल बी आवर लास्ट स्टेप. So we have called the first function as u, second function as v. So according to the key steps, find du by dx first. Now how to find du by dx? Du by dx का meaning क्या है? Differentiate u with respect to x. Right hand side को x है ना? So differentiate u with respect to x. Okay, that is du by dx. But एक ध्यान में रखो, instead of differentiating directly in inverse trigonometric functions, we have seen that whenever you get something like this, बड़ी term है tan inverse के सामने, we solve by substitution method. Okay, substitution के problems लिए हैं पहले हमने. So for root of 1 minus x squared there is a standard substitution. Put x equal to sin theta. जहाँ जहाँ root of 1 minus x squared आया वहां पे either you can put x equal to sin theta or put x equal to cos theta. But in most cases, 99% cases, we put x equal to sin theta. We are solving this derivative by differentiation. So when you put x equal to sin theta, अपनी standard step क्या है? Theta is equal to sin inverse x. Sin inverse left hand side को आ गया. So this is our main substitution. Put x equal to sin theta. Theta will be equal to sin inverse x. Sin inverse यहाँ पे लिया comes as sin यहाँ पे लिया comes as sin inverse. Call this as equation 1.
अभी एक्चुअली सब्स्टिट्यूट करो यहाँ पे, पुट साइन थीटा हियर, साइन थीटा हियर, जहां पे x है वहां पे साइन थीटा, सिंपल. सो व्हाट डू यू गेट? tan इनवर्स साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज यहाँ पे x इक्वल टू साइन थीटा है. Now 1 minus sin square theta is our good old formula, cos square theta. So you get root of cos square theta. Now there is no rocket science behind this. Root of cos square theta is cos theta. So finally what do you get? Tan inverse sin theta upon cos theta. Now sin theta upon cos theta is tan theta. So that is what we want. Tan inverse tan आया तो tan inverse tan cancel होता है, sin inverse sin cancels. We have seen many such derivatives for inverse trigonometric functions. Tan inverse tan actually cancel नहीं करना एग्जाम में. I am just showing it over here. They ignore each other because both are opposites. So what remains is u is equal to theta. अभी ऐसा मत छोड़ो. थीटा की वैल्यू क्या है? sin inverse x. So u is equal to sin inverse x. तो u is equal to sin inverse x is much more simpler than this. इतना कौन डिफरेंशिएट करेगा? 1 अपॉन tan इनवर्स का फॉर्मूला यूज करने के बाद चेन रूल बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना. सो सब्स्टिट्यूशन से वी गेट ओनली u is equal to sin inverse x, that's all. tan इनवर्स चला गया वहां से. ओके, सो sin इनवर्स x अभी डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x because it is a simple derivative. So du by dx, d by dx of sin inverse x, d by dx of sin inverse x is 1 upon root of 1 minus x squared, standard formula. So that is how you get du by dx. Key step का first part हो गया. Now what? Find dv by dx. So to find dv by dx, consider the equation of v now. What is the equation of v? Second function को v बोला है ना हमने. So v is equal to sec inverse all this. Now there is one important step over here. It is better to convert sec inverse into cos inverse, cosec inverse into sin inverse, because we have simpler formulae for those. Okay? So inverse trigonometric का एक property है which we have seen, that to convert sec inverse into cos inverse, sec is the reciprocal of cos, तो इसका भी रेसिप्रोकल लेना है. ध्यान से देखो, to convert sec inverse into cos inverse, you have to take the reciprocal of this also, that is 2x squared minus 1. This comes above. That is one important property for inverse trigonometric function. Okay, it is like using invertendo inside the bracket. Why? Because sec inverse has been converted into cos inverse. ये भी बदल जाएगा. इसका रेसिप्रोकल ये है तो इसका रेसिप्रोकल ये है. As simple as that. So we have converted into something simple. Cos inverse 2x squared minus 1. Again 2x squared minus 1, there is a standard substitution. Put x equal to cos theta. अभी cos theta क्यों? पहले sin theta किया, अभी cos theta क्यों? I'll explain. So put x equal to cos theta. Theta is equal to cos inverse x. वापस same way. Call this as equation 2. Theta is equal to cos inverse x. Now actually substitution करो friends. V is equal to cos inverse 2x squared minus 1 gives you V is equal to cos inverse. यहाँ पे सिर्फ x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, 2 cos square theta minus 1. अभी समझ में आया? 11th स्टैंडर्ड फॉर्मूला. 2 cos square theta minus 1 is nothing but cos 2 theta. Cos 2 theta के 4 फॉर्मूले हैं. It is one of those formula is 2 cos square theta minus 1 is cos 2 theta. Now in order to get cos over here, cos 2 theta over here, we made the substitution x equal to cos theta. Because 2 cos square theta minus 1 is cos 2 theta. Finished. अभी cos inverse cos cancel कर लो.
v is equal to 2 theta again. So after getting v is equal to 2 theta क्या करते हैं? Resubstitute value of theta. चलो करो, resubstitute value of theta. Last few steps we'll solve it. Resubstitute value of theta. थीटा की वैल्यू अभी चेंज हो गया सेकंड केस के लिए. थीटा की वैल्यू क्या है? cos इनवर्स x. Therefore v is equal to 2 cos इनवर्स x. आसान हो गया. This is much more simpler, isn't it? Okay. So now when we differentiate, it will be much more simpler. Differentiate with respect to x. So dv by dx. टू कांस्टेंट बाजू को एज यूजुअल डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x. सो dv by dx डेरिवेटिव ऑफ cos इनवर्स x -1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड. सो 2 into -1 minus 2 upon root of 1 minus x squared. Last step, what is asked? We have to find du by dv. Differentiate one function with respect to other means find du by dv. तो parametric formula लिख लो. du by dv is equal to du by dx upon dv by dx. Parametric formula. How do you know it is correct? dx ignore karo. du by dv equal to du by dv. As simple as that. Just substitute the values. du by dx we have got the answer over here. कहाँ पे है? du by dx यहाँ पे 1 upon root of 1 minus x squared. dv by dx का कहाँ पे आंसर है? इधर ही फाइंड किया है. वी हैव फाउंड आउट -2 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड. सो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मींस फाइनली अपना फेवरेट फॉर्मूला 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर्ड इनटू रेसिप्रोकल ऑफ डिनोमिनेटर. न्यूमरेटर इनटू रेसिप्रोकल ऑफ डिनोमिनेटर. इसका उल्टा करना है. व्हेन यू रिमूव दिस साइन, root of 1 minus x squared gets cancelled. Final answer is du by dv. ऊपर है 1, नीचे है -2. It is better to take the minus sign in the numerator. -1 by 2. Remember, minus sign can be written. It can be written here also. It can be written here also. और सामने भी कहीं पे भी लिख लो. Okay. So this is the final answer. Derivative of this function with respect to this function is nothing big. सिर्फ du by dx dv by dx फाइंड आउट करो. पैरामेट्रिक फॉर्मूला यूज करो. गेट द आंसर. द फाइनल आंसर इज -12. सिंपल. ओके. प्रैक्टिस करो सब जो लिए हमने आज तक. ओके. सो दैट विल बी ऑल फॉर डेरिवेटिव्स. आई थिंक बाद में देखेंगे कौन सा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है तो देखेंगे. ओके. दैट विल बी ऑल फॉर टुडे. एंजॉय द वीडियो. शेयर करो, प्रैक्टिस करो. ओके. बाय.